Hey, it's Vineet here. Before I get into this episode, I just want to come in and say that the sound quality on this episode is a little bit iffy. Usually we record with a pretty basic setup, to be honest. Just the regular mic, not a fancy mic, a pair of earphones, or if I'm in studio, then all the fancy studio equipment. But this time around, Monika and Sparsh, the leading pair of Jamtara, who I had a wonderful conversation with, truly amazing, fantastic people. They didn't get the memo about how to prepare for what ended up being their first podcast. They had a very makeshift sound setup. I had this exact setup. They were passing a pair of AirPods between them to make sure that I could hear them all right, which is a fun experience, and why should you be left out? So yeah, if you enjoy a little bit of lo-fi, a little bit of realness in your podcasting, then you will hear me say this is Storytellers and Storysellers live on tape right after these few messages. So, happy Dashara, happy listening to this podcast, and go watch Jamtara. This is Storytellers and Storysellers live on tape. You're listening to Vineet Kanabar on the IVM Podcast Network. I want to tell you about a time when my mom got scammed for 13,000 rupees. She got a call from someone who asked her to give her an OTP over the phone. My mom is a naive old woman, and she gave them her OTP over the phone. 20 minutes later, she realized that 13,000 rupees from her account were gone. Then she called me and cried about 13,000 rupees. And I told her never to give anyone an OTP or any kind of financial information over the phone. The reason why I'm telling you this sad story about my poor old mother is because today we're talking to a couple of people who are in the business of scamming people out of their money, or at least star in a show that is about scamming people about their money. Actually, it's not just about scamming people about their money. It's about small town politics with the backdrop of phishing scams. It's a beautiful story that has been put on screen for the first time. Season 1 came out in 2020. Obviously, I'm talking about Jamtara. Obviously, we are joined by Monika Pawar and Sparsh Srivastav on the show. Monika, Sparsh, welcome to Storytellers and Storysellers. Thank you so much, Vineet. Yeah, thank you. Glad to have you on. On this episode, we will talk to Monika and Sparsh about where they come from, about how they landed this role, how they prepared for this amazing story about small town India. All of that and other good stuff. Jamtara Season 2 is coming out on 23rd September. I think it'll be yesterday when this show comes out, because I think we'll drop this episode on the 24th or maybe somewhere there. Monika, Sparsh, before we talk about Jamtara, I'd love to get to know the two of you a little bit better. And we'll start with Monika. You're an NSD grad. You're someone who's come into the industry with a bang with this show. Season 2 is all about Gudiya versus Brajesh. Brajesh, exactly, the character that Amit Seal plays. What has this journey been like? How has it been for you? I think I'm very fortunate to be here, and just after passing from NSD in 2017, and in 2018 I moved to Bombay. And I guess after 6 and 7 months, Jamtara ka script mere haath mein tha. I mean, I have auditioned for that part, and I've got selected for that. So I think मतलब हम सब लोग इसी बारे में बहुत बातें कर रहे हैं कि हम लोग मतलब जितने भी आर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, we are in the golden age, right now, because there's this kind of revolution happening here abhi. And we all are part of that. हम लोग how fortunate we are कि ये हम लोग जो stories शायद से लोगों ने डब्बे में छुपा के रखी थी, this is the time those stories are coming out, and writing table आपका बड़ा हो गया है. Actors के लिए this is such a good opportunity. We always say this thing that there was a time जब parallel cinema आया था. And today, and because I was in NSD when I read about that cinema, और जब मैंने उन characters को देखा, so I was like, wow, these people are so fortunate कि Nasir sir, Om Puri sir उस time में pass out हो रहे थे. Smita Patil from FTI, Shabana Azmi, जब ये revolution चल रहा था. And the same thing is happening with us. And everyone is working. मतलब सबके पास काम है और बहुत ही अच्छा time है सबको, अपनी कहानी कहने का और उस कहानी का पार्ट बनने का. सो यार मतलब इससे अच्छा टाइम ऑफ कोर्स आएगा, बट आई तो फील वेरी फॉर्चुनेट. लव इट. एंड आई थिंक यू हिट इट ऑन द हेड व्हेन यू सेड ये डब्बे में जो कहानियां छुपा के रखी हैं,
वो कहानियां जब स्क्रीन पे आ रही हैं, it is unexpected, it is different, it is interesting, and I think the audience is responding in such a fantastic way. One of the things in season 1 that the audience responded to in a beautiful way was Sparsh, your character and the relationship that Sunny had with Rocky. सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि वो अभी भी इंटैक्ट है सीजन 2 में या कुछ नया ट्विस्ट आने वाला है? भाई काफी सारे नए ट्विस्ट आने वाले हैं, बट इफ आई टॉक अबाउट माय एंड रॉकीज रिलेशनशिप, इट हैव ग्रोन इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर, क्योंकि दो भाइयों की कहानी है। और इस बार अगर जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ये है कि कैसे काफी अनसेड एक रिलेशनशिप में जो चीजें होती है ना, तो भाइयों के बीच में जो एक अनसेड वाली बात होती है कि हम एक दूसरे को मुंह पे भले गालियां देते हो लेकिन मन में प्यार ही है, तो वो और ज्यादा निखर के दिखेगा आपको सीजन 2 में। सीजन 1 में भी था, पर सीजन 2 में और ज्यादा निखर के दिखेगी वो बात आपको। Tell us a little bit about your story, man. How did you land up on the silver screen with Jamtara? What led up to it? I'd love to get to know you a little bit better. While I was growing up, I was interested in dancing. I remember जो शादी के बैंड मेरे घर के नीचे से जाते थे, उसपे एक सॉन्ग चलता था, याल्ला याल्ला बल्ले बल्ले। तो मैं सोती नींद से जग के ऐसे बल्ले बल्ले करता था उस टाइम पे। तो मम्मी को पता चला कि इसे डांस करना है, so she started teaching me this Bollywood form, what she knew, and मेरी पहली स्टेज परफॉर्मेंस हुई यार जब मैं 2 साल का था। फिर उसके बाद वो डांसिंग का चस्का kept growing. I learned Kathak and everything, and then after some 8 years, I participated in the show called Chak Tum Log. This came on Colors Channel, and I won that show fortunately, which was again an unexpected thing that happened to me. और फिर कुछ टाइम बाद शो जीतने के 2 साल बाद मुझे एक सीरियल का ऑफर आया which I had to audition for. That was my first audition. It was Shake It Up Mumbai for Disney Channel. पहला ऑडिशन दिया और फिर मुझे एक्टिंग में एक पहला रिकग्नाइजेशन मिला कि हाँ दिस इज समथिंग आई कैन डू। और मेरे को पता चला एक्टिंग कैसी होती है, तो मुझे फिर उसमें मजा भी आने लगा। मैंने कहा डांस में तो ये शो जीत ही लिया है, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू इन माय लाइफ। तो दैट्स हाउ आई गॉट रूटेड टुवर्ड्स एक्टिंग। और फिर वो शो मैंने किया था भाई 2013 में। उसके बाद मैंने कुछ सीरियल्स किए, कुछ टीवीसी एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह किए, एंड आफ्टर सम गुड लॉन्ग 7 years I got selected for Jamtara. So people think that I'm really new to the industry, but I'm not. But what this journey has helped me with कि यार मेरा एक्टिंग का क्राफ्ट इसी की वजह से ग्रो हुआ है, जो मैंने सीरियल्स किए या फिर टीवीसीज किए। तो मैंने ना रास्ते का चीजें सीखी हैं, आप ऐसे कह सकते हो। अपनी इस जर्नी में एक्टिंग को सीखा है। मैं किसी थिएटर बैकग्राउंड से नहीं हूँ, but I feel these raw learnings what you have in your life, they are the best sometimes. It keeps you raw. तो फिर ऐसे ऐसे मैंने ऑडिशन दिया and then Jamtara happened. So just to give you a short brief of who I am, I'm a dancer, I'm an actor, and now I'm a singer too. But I'm learning, I'm still growing on that singing path. Love it, man. Let me ask you this, guys. The two of you, and I know, first you mentioned you're not a newcomer, you've been around for a while. Monika, you've been in the industry a few years now as well. Yeah. Was it daunting to be part of a show where you're also working with guys like Amit Sial, Seema Pawar? There's so many stalwarts, people who've been on screen, people who've been on stage, people who've played such a wide spectrum of characters. How was that experience? Did you get to learn from them a lot, or were you apprehensive? How did that play out? We'll take it to Monika this time. Yeah. So what is the best thing in रमे हुए खिलाड़ियों के साथ काम करने का कि आप ये आपको बहुत ही कंफर्टेबल भी करवाते हैं और अनकंफर्टेबल भी करवाते हैं एट द सेम टाइम। यू नो ये कंफर्टेबल सीन से पहले करवाते हैं आपको, यू नो, और अनकंफर्टेबल जैसे वो सीन में घुसते हैं। सो बट इट्स लाइक इनके ये इतने एफर्टलेस है ना, यू नो, इतने टाइम का एक्सपीरियंस है इनके पास कि हम लोग अचानक से जो हम लोगों का एफर्ट है, क्योंकि हम लोगों ने अपना करियर शुरू मोस्ट ऑफ द लोगों ने जामतारा से किया है, तो जब हम लोग अपने सीन में सपोज करो सनी और गुड़िया का कोई सीन है तो फिर भी हमें काफी एफर्ट लगाना पड़ता है, यू नो, to achieve that. Yeah, to be effortless. Yeah. लेकिन अमित सर के साथ, सीमा मैम के साथ, it's just like playing a ping pong game. You just have to react, and it's so fresh. It's like आपको कुछ नहीं करना है. You just have to be very attentive at that time. You know, कि they will give you something very special, and you just have to catch it. So it was never daunting, but what a wonderful experience to work with these kind of actors. I mean. ये बहुत बातें होती है हमारी इंडस्ट्री में कि यार वो तो आया और ये तो उसका सीन है, मैं तो वो सीन खा गया,
मैंने तो ये कर लिया, वो दिखाई नहीं, जो मेरे सामने खड़ा था वो दिखाई नहीं. बट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी बेहतरीन एक्टर के साथ काम कर रहे हो तो आप कुछ भी ना करो ना, तो आप दिखोगे ही दिखोगे. मतलब इट्स लाइक it's about the scene. They know it's not about you. It's not about you as an individual. It's about the scene. And I think that's how the time is changing कि लोग एज एन एक्टर या कैरेक्टर नहीं देख रहे हैं. पहले थोड़ा सा अभी राइटर को तवज्जो मिलने लगा, उसकी लाइंस को तवज्जो मिलने लगा. अदरवाइज बाहर आप देखो, यू कैन नॉट चेंज शेक्सपियर का लाइन, राइट, कि यार मैं हैमलेट कर रहा हूँ, मैं ना इसको बदल देता हूँ. बट इट्स चेंजिंग दैट वी आर लाइक आस्किंग आवर राइटर्स की do you want me to change it? I mean, this approach is changing and I hope abhi aage chal ke kafi change ho. But it was not daunting. It's a beautiful thing. I mean, ye hum jaise beginners ke liye this was like a dream come true to work with these people. Absolutely love it. And I was reading an interview with Prashant where he was talking about how he really put the show together. And it's such a compelling story, right? I mean, came from this one article that he read in the National Daily, and from there on, right, just one article leading to such a massive, interesting story. You know what it reminds me of? It reminds me of Inventing Anna, right? Inventing Anna, the show came from one article, but it's fleshed out into such a beautiful story. Again, a bit of scamming, bit of politics, bit of commentary on how our society is. Let me ask you this. How did you prepare for these characters? I read somewhere while I was researching for this episode that, Monika, you wore traditional clothes for a few months to get into the skin of the character. How was that process? I mean, I want to know a little bit about your process as well from this. You know, Vineet, it's like, I think अपने प्रोसेस को स्टार्ट से एंड तक बताना, इट्स क्वाइट वेरी इम्पॉसिबल बिकॉज यू नो व्हाट आई एम सेइंग. बट द थिंग इज कि आप कैरेक्टर के सोल तक जाने के लिए, क्योंकि आई थिंक ऑब्जेक्टिव वो रहता है, यू नो, द पर्पस इज टू गो जितने डेप्थ में हो सके. तो आई थिंक सबसे मुश्किल होता है कि हम शुरू कहाँ से करें, क्योंकि एक बार आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया ना, देन तो इट्स लाइक मतलब गाड़ी निकल पड़ती है. लेकिन वो स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ना बहुत मुश्किल होता है. तो मुझे जो याद है, क्योंकि आई एम नॉट समवन जो अपने डे टू डे लाइफ में लड़की सूट पहनती है, तो मैंने स्टार्ट वहां से किया था कि एंड आई ऑलवेज बिलीव आप मेथड के पास नहीं जाते. देयर इज दिस थिंग ना, मेथड एक्टिंग, आप मेथड के पास नहीं जाते हो. बिल्कुल. अगर आप सच में पर्पसफुली अपने कैरेक्टर से कनेक्ट होना चाहते हो तो मेथड आपके पास आता है. आई मीन अदरवाइज, क्योंकि तो मैंने ये शुरू ऐसे किया था कि जस्ट सिंपली, मतलब मैंने कॉस्ट्यूम वालों से अपना जो गुड़िया का जो सलवार कमीज दुपट्टा है वो लिया था, और मुझे कुछ नहीं करना होता था. मैं उस टाइम पे यारी रोड में रहती थी, हमारा वर्कशॉप लिंक रोड में चलता था. मैं वहां से उधर बैठ के ऑटो में सिर्फ वो सूट पहन के आती थी, और जैसे वो बैग टांगती है ना, बस वो करती थी. अचानक से बहुत सारी चीजें मुझे वहां से मिल गई. लोगों, कौन से लोग आपको पहले देखते थे और कौन से लोग फिर आपको बाद में देखने लगे, एंड बहुत कुछ उसका वॉक मिल जाता है. उसका आंखें वो कैसे उठाती होगी, किन लोगों को देखती होगी, मुंह नीचे करके चलती होगी मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन बहुत अटेंटिव रहती होगी. तो आपको धीरे धीरे चीजें बहुत सारी मिलने लग जाती है. So, but my preparation is always like to know the psyche of the character. I'm very much interested in the thought process. मतलब I'm really more about knowing the internal, what's going inside, rather than the external thing. Because this is my thing कि I believe जैसे आप सोचते हो ना, वैसे आप बाहर दिखते हो. So it always reflects what you are inside. और वो बाहर ऑटोमेटिकली फिर वो एज अ एक्सटर्नल में ले लेता है. सबका अप्रोच अलग होता है. कुछ लोग एक्सटर्नल से इंटरनल जाता है. आई मीन, इफ लाइक दिस इज अ सिंपल एक्शन, राइट, ऐसे पकड़ के माथा बैठना. इफ यू गोइंग टू सिट लाइक दिस नाउ फॉर 15 मिनट्स, आपको सच में लगेगा आपकी जिंदगी तबाह हो गई, आपको फील आने लगेगा. सो दिस इज हाउ सम पीपल गो लाइक एक्सटर्नल. आप ऐसे ज्यादा देर बैठोगे तो आपको लगेगा आप सच में परेशान हो. सो देयर आर लॉट्स ऑफ अप्रोचेस टू गो थ्रू इट, बट आई एम मोर ऑफ लाइक कमिंग फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल पर्सन. When Monika says आप ऐसे बैठोगे, she means with your hand on your forehead like a face palm position. जैसे कि आपकी किस्मत पूरी तरह से फूट चुकी है. I'm just explaining that for my listeners because this is a podcast. Sparsh, how about you, man? Is your process similar to what Monika said? I know, and what I gather as well is आपका character
एक स्क्रिप्ट में तो होता ही है, बट काफी आपकी इमेजिनेशन में होता है, काफी आपने क्या पढ़ा, क्या सुना, आप खुद किस तरह से उसे इंटरप्रेट करते हो, उसमें होता है. व्हाट्स योर प्रोसेस लाइक? इज इट सिमिलर, इज इट डिफरेंट, इज देयर समथिंग दैट यूड लाइक टू शेयर? So my process was somewhere similar, but I was not aware of this process कि ऐसा भी process होता है, because I'm not a student of any theater school. So I was not even aware of this thing कि आपको एक process के through जाना पड़ता है. But the best part what played in my favor was we got a good long time to prepare the character. We got some good 2 months for that. So when you have that script in your hand straight for 2 months and you're reading it, you read it again and again, then you get to know more about your character. फिर आपको ना स्क्रिप्ट ही काफी कुछ बता देता है अपने आप. तो एक तो वो चीज रही मेरे फेवर में. दूसरी, if you see Sunny is very flamboyant. He have that swag in himself. And और वो थोड़ा सा he walk like a swinging guy. तो वो सब मेरे अंदर ऑलरेडी था. तो वो भी एक बहुत आपको बड़ी ऑलरेडी आगरा का सबसे अमीर लड़का बनना था. यार छोटा शहर हो जाएगा ये कहने के लिए बात. well said sir. Like I said, वो थोड़ा अंदर से आता है, थोड़ा बाहर से आता है, थोड़ा प्रिपरेशन से आता है. मेरा वही प्रोसेस है. मेरा वही प्रोसेस है कि मेरा सिर्फ एक ही अप्रोच रहता है कि मैं कैसे इस कैरेक्टर को कंप्लीटली ओन कर लूं और मैं ये भूल जाऊं कि मैं स्पर्श हूं, और मैं ये बिलीव कर लूं और मैं अपने आप को ये बिलीव दिला दूं सबसे पहले कि मैं सनी हूं. तब ये फिर जो अपने आप चीजें होने लगेंगी ना मेरे साथ, वो वही होंगी जो सनी करना चाहता है. तो लाइक शी सेज कि जब वो सूट पहन लेती थी तो अपने आप उसके थॉट प्रोसेस बदल जाते थे, अपने आप उसके पास वो चीजें आ रही थी. हाउ विल शी लुक एट थिंग्स, हाउ विल गुड़िया डू दिस. तो मैं भी बस वही करता हूँ, मैं अपने आप को बिलीव दिला लेता हूँ. मैं कपड़े वपड़े अब मैं करने लगा हूँ वो सब कि हाँ जो मेरा कैरेक्टर पहनता है मैं वैसे कपड़े खरीद लेता हूँ और अब मैं वो पहनने लगता हूँ. पर जमतारा सीजन 1 में मैंने सिर्फ अपने आप को ये बोला कि मैं सनी हूँ, और फिर मुझे सब लोग आसपास भी मुझे सनी ही बुलाने लगे. तो जब आपके इर्द गिर्द इतने सारे लोग आपको सनी 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 करके बुलाते हैं, आपके कैरेक्टर के नाम से बुलाते हैं, देन यू स्टार्ट ओनिंग इट. फिर वो अपने आप ही अंदर आ जाता है. तो अब मेरा जो रिक्वेस्ट होता है मेरे जितने भी नए डायरेक्टर्स हैं या जो भी नई टीम के साथ मैं काम करता हूँ, मैं बस यही कहता हूँ कि अब मेरे को स्पर्श मत बुलाना. फ्रॉम द टाइम आई गेट कनेक्टेड टू द प्रोजेक्ट में, कि अब मेरे को मेरे नाम से मत बुलाना, मुझे मेरे कैरेक्टर के नाम से बुलाना. फिर अपने आप ना आपका थॉट प्रोसेस उधर आने लगता है. Absolutely love it. जब मेरे को लोग सनी 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 बुलाते थे तो अब मुझे थॉट्स भी वही आते थे कि अब अगर मैं घर पे कुछ बना रहा हूं तो फिर उस टाइम पे मैं स्पर्श की तरह नहीं सोच रहा होता था, मैं सनी की तरह ही सोच रहा होता था. तो आपका थॉट प्रोसेस मेरे लिए ये ऐसे काम करती हैं चीजें कि लोग मुझे मेरे कैरेक्टर के नाम से बुलाने लगे. और द ओनली थिंग इज आई हैव टू मेक माई सेल्फ बिलीव दैट आई एम दिस कैरेक्टर. But do you then find yourself scam calling people sometimes? I'm joking. We have done that, bro. Like we have done that for real, but we were not able to pull that scam off. Ultimately, हम इतने trained नहीं हैं जितने जमतारा के real scammers trained हैं. But we used to do that. And have you guys been to Jamtara? I mean, I don't know where the show is shot, but have you guys been to the city in question? No, we have not been to the city, but the team have gone there for their research and while the project was in the writing process. और फिर कुछ shots लेने के लिए, वहाँ के montages वगैरह लेने के लिए टीम गई थी. Actors नहीं गए थे क्योंकि season 1 में we got to know that it is risky to shoot there. Right. So it was not possible for us. So we always, we recreated all the locations of Jamtara in Vai or Satara or Lucknow for this time, and Pune. So yeah, we have never been to Jamtara, but we would love to because it's a beautiful, beautiful place to go. Maybe that's something you guys should do as a promotion tour for season 2. Actually, go to Jamtara. Very weird for her to be whispering into your ear, and then this is a podcast. It will be a fun video to watch. It's like I'm giving him the answers. That's super cool. I mean, I have done a lot of these episodes, but this is the most like Jugadu way of doing it. So Jamtara. I'm loving it right now. It is totally right. Guys, thank you for sharing your process. I think one of the things that has been a consistent part of every review that you read about Jamtara is the acting, right? And the way you guys talked about your process, I think just shows where that really comes from. I'm going to go into a quick break. On the other side, we'll talk about your shoot experiences for season 1 versus season 2. We'll talk about what you're expecting
the audiences to say when season 2 comes out. And we'll talk about what other projects you have on the floor. Go nowhere. This is Storytellers and Storysellers. We're having some audio issues, but it's a fantastic chat with Sparsh and Monica from Jamtara. We'll be back right after these messages. And we're back. This is Storytellers and Storysellers. I'm Vineet Kanabar. You're listening to me talk to Sparsh and Monika Power from the cast of Jamtara. Season 2 is out now, probably on Netflix. I mean, check it out. Let me ask you this, guys. Season 1, you were actors coming into the fold, clean slate. Kisi ko pata nahi Jamtara ke bare mein. I remember when it came out in 2020, my eyes were like wide open. I was like, dude, this is a story worth telling. This is a story worth watching. Season 2 of anything comes with expectation, right? In music, we have this phrase called the sophomore slump, right? Any new band comes out with their first album, it's a runaway hit. Everyone's like, oh, wow, what a great band. And then they have to live up to that album with season 2. How are you feeling about season 2 right now? Yeah, we are feeling equally excited as much as audiences, because we also have not seen anything from season 2, though we have shot it. But we are also feeling pretty confident because this time the season is packed with a lot of entertainment and also the information that we are giving away. So if I tell you that in season 1, we told audience that एक जमतारा करके जगह है जहाँ पे फिशिंग नाम का स्कैम होता है और ये कैसे होता है उसका कुछ हिस्सा हमने बताया था. पर इन सीजन 2 वी आर गिविंग अवे ऑल द इंफॉर्मेशन कि ये स्कैम कैसे इजाद होते हैं, कैसे लोग सोचते हैं, कैसे बनाते हैं और फिर कैसे काम करते हैं और ये फिर कैसे कैसे लोगों पे अटैक करते हैं. तो और सिर्फ वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट वन स्कैम, वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल टाइप ऑफ स्कैम्स दिस टाइम. So we are really excited and hopeful that people would like it. Love it. I know that there is a interesting dating scam sort of a space that you're going into as well. I know that the political angle of the show is much more pronounced in this season as well. What are your expectations, Monica? You know, I think I want to start from here. Like, I want to give a whole credit to Trishant, our writer, for this. Because like you said about season 2, and हमारे इंडिया में या फिर कहीं भी एक हिस्ट्री रही है season 2 को, जब आता है ना season 2, so it's like, do you want to explain that action again? Yeah, I think like Monica Titanic. just did a nosedive action, the Titanic sinking nosedive action. Yeah, I'm like an interpreter at this point. Yeah, go on please. So अपनी हिस्ट्री रही है. हम लोग यार स्टार्टिंग में उससे बहुत डरे हुए थे और हमारे जो डायरेक्टर है सोम सर, he was like कि because we have started our career from Jamtara only. So Som sir was Right. like कि यार देखो यहाँ पे ये चलता है कि अगर आप एक हिट भी दे दो, दूसरी हिट भी दे दो और तीसरी अगर हिट नहीं हुई तो लोग बोलेंगे गलती से हो गया आपसे. It was a mistake. वो गलती से आपने एक्टिंग कर ली, गलती से डायरेक्टर ने डायरेक्ट कर लिया. One hit wonder. Yeah. It is a Yeah. phrase that you want to stay away from as much as possible. So we were like very conscious, like कि नहीं यार, मतलब हमसे गलती से नहीं हुआ है, ये गलती से नहीं हुआ है. और ये हमारे लिए भी चैलेंज था, हमें भी लगा था क्योंकि गलती से कर लिया. क्योंकि लेकिन मैं राइटर को इसलिए क्रेडिट देना चाहूंगी त्रिशांत को, बिकॉज उन्होंने जो इमोशनल जर्नी लिखा है ना सारे कैरेक्टर्स का, it's brilliant. I mean, it's like because he is the one now who has given all the arcs, the depth to the character. And I was very nervous कि यार election आ गया फिर से, because I'm like, मैं बहुत पक चुकी हूँ मतलब बहुत सारे shows में election देख के, and that same gesture of like doing namaste, giving big speeches. And I was like, but when I read the script, I was like, wow, क्योंकि it's not just about, we are not talking about election. It's like how election and the fishing thing is all correlated. Yeah. कि दोनों Right. एक दूसरे को कैसे ड्राइव कर रही है. So I was like very happy. I was like, bro, thank God मुझे वो speeches नहीं देना है and all that stuff. So yeah, I mean season 2 was मतलब it was quite very challenging and we enjoyed it a lot because आपने सीजन 1 में काफी इमोशनल जर्नी कैरेक्टर का दिखा दिया, द इंटेंसिटी एंड ऑल. देन वी वर लाइक अब क्या करें कि रिपीटेटिव ना लगे. So it was like a challenge, and season after season is like a big, मतलब इससे बड़ी बात क्या होगी, actor doing season after season, because then it's like
onion, there are layers after layers after layers. So I think that's interesting, and that's always intrigues me कि what next we can do कि लोगों को repeat ना लगे. But season 2 is like full on fun, यार, fun ride. I mean, power is a very strange thing, right? And it's power, that lens that connects everything within the show. At least from what I know from season 1, it is the power that scam caller has over the other people. It's the power that the politician has over that group of boys. It's the power that keeps shifting from character to character, and that's what drives the story. I think to me, the show is a study in power and the dynamics of power in small town India through the lens of fishing and through the lens of the scam calls that keep happening. I'd love to hear your experiences and how maybe you can compare and contrast it, how the experience of shooting season 1 was versus season 2. Was season 2 more fun to shoot, maybe because you were more comfortable with the characters, more comfortable with the people? We'll start with Monica. She's gesturing. I have a story to tell, so please go on. I've answered this question. मतलब I don't know. मतलब हम कितनी बार ही जवाब दे चुके हैं. But I will tell you something new. Of course, there was Love it. because season 1 का budget और season 2 का budget was मतलब season the budget. आप वही बात है ना, अगर आपके पास रिसोर्सेज आ गया तो या तो फिर आप उसको इस्तेमाल करो या फिर आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो. लेकिन हमने सीजन 2 में जितना भी हमें रिसोर्सेज मिला था, हमारा बजट जो बड़ा था, वो आप जब सीजन 2 देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने पैसा लगाया है, अपनी जेबें नहीं भरी है सिर्फ पैसों से. सो द बेस्ट पार्ट वाज कि सीजन 1 में हम लोग जब सीन्स करते थे ना, सो इट्स लाइक 3 या 4, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट सीन जहां पे ब्रजेश पहली बार सनी गुड़िया के घर आता है. एंड सच ए इम्पोर्टेंट सीन इट इज. और वो कैसे शूट हुआ है कि बाहर से प्रोडक्शन बोल रहा है अरे टाइम हो गया जल्दी करो, एंड ब्रजेश मुझे यार डरा रहा है. मतलब it was I mean we are trying to concentrate and production वाले लाइट आ रहा है बाहर, एंड हमको वो सीन करना ही करना है because we don't have any option, we don't have money. क्योंकि वो but in season 2 there was this scene, मतलब जो एक कैरेक्टर है बच्चू का, उनमें से they were not, कुछ था उस दिन. अगर कभी सीजन 2 में ये हालत थी कि अगर कैरेक्टर को वो फील नहीं हो रहा है ना, मतलब एक्टर को अगर फील नहीं हो रहा है, तो हमारे पास बहुत सारे दिन थे वो फिर से शूट करने के. तो एक ही सीन के लिए आई रिमेम्बर उस टाइम पे पैंडेमिक भी चल रहा था, तो मेरा एक सीन है, बट हम लोगों का वहां 3 दिन सेट लगा रहा. एंड हम लोग हर समय ट्राई करते थे कि वो हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाता था. तो वो 3 दिन तक सेट उधर लगा रहा और हम लोगों ने 3rd या 4th डे वो शूट किया. तो हम लोग मतलब इतने ठाट में, इट वाज नॉट दैट काइंड ऑफ ठाट बाट, लेकिन हर सीन को बहुत ही तवज्जो दी गई है. अगर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है उसको भगाया नहीं गया है. जो हम सीजन 1 में तो वी वर लाइक 7-7 8-8 पेजेस उड़ाते थे. But I mean hats off to सोमेंद्र पाडिया डायरेक्टर, दैट भले आप 7 से 8 पेज शूट कर रहे हो तो भी जो आपकी क्वालिटी है वो सफर नहीं करती, बिकॉज ही मेड अस सो प्रिपेयर्ड इन दी वर्कशॉप टाइम. तो क्वालिटी ने कभी सफर नहीं किया, क्योंकि जनरली क्या होता है, आप इस 7-8 पेज को उड़ाने को कहते हो छाप रहे हैं, सीन छाप रहे हैं आप, राइट, पर वो छपाई नहीं हो रही थी. वो हम उन सीन्स में वेल प्रिपेयर्ड थे, इसलिए हम वो पुल ऑफ कर पाए. पर एक और मैं आपको सुंदर कहानी बताना चाहूंगा सीजन 1 से सीजन 2 की जर्नी में, कि ज्यादा मजा किसमें आया. इक्वली दोनों में मजा आया. आई रिमेम्बर सीजन 1 में क्या होता था कि हमें एक वैनिटी रूम मिलता था और उसी में हम 6 लड़के, जो हमारी पूरी गैंग है ना, मुन्ना, बच्चा, शाबाश, पोंटो, रॉकी, सनी, हम सबको उस एक वैनिटी वैन के रूम में घुसा के रखते थे, बिकॉज हमारे पास बजट नहीं रहा. पर वो इतना सुंदर है ना कि मतलब सारे लोग एक ही जगह पे, हम कपड़े भी एक दूसरे के सामने बदल रहे हैं. और आई थिंक वो इसने हमारी ग्रुप की केमिस्ट्री को इतना निखार दिया ना कि हमें पता है सब कि तू कौन सी चड्डी पहना है आज, और हाँ, किसने कौन सी चड्डी, कौन सी इलास्टिक वाली नहीं पहनी है, किसने नहीं पहनी है. तो हमें वो सब पता था. और फिर सीजन 2 में सडनली हर किसी के पास अपना वैनिटी रूम था, सडनली हर किसी के पास अपना अपना कमरा था होटल में. सीजन 1 में तो हम लोग को 2-2 लोगों को एक साथ रुकाया जाता था. अरे प्रोडक्शन की बेइज्जती मत कर. नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको सुंदरता हमारे शो की, कि सीजन 2 में फिर सबको अलग अलग रूम मिलने लगे, लेकिन
हम तब भी एक ही रूम में मिलते थे। ये सीजन मतलब हमारी टीम की, जमतारा टीम की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बट टॉकिंग अबाउट द प्रोड्यूसर साइड, सीजन 1 को एक कम बजट में इतना अच्छा शो बनाना, इट इज अ टास्क ब्रदर। आई थिंक जब बजट कम होता है ना, तो आपकी क्रिएटिविटी कहाँ से निकलती है, अब मैं क्या बताऊं। इट्स लाइक आप तभी काम कर सकते हो। अगर आपके पास बजट कम रहता है ना, तो आप अपने प्री प्रोडक्शन को ज्यादा टाइम देते हो और शूटिंग डेज को कम देते हो, जो आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए। अदरवाइज इफ यू आर लाइक बहुत बजट है आपके पास, तो आप प्री प्रोडक्शन वाला काम भी शूटिंग वाले दिन ही कर रहे होते हो। सो आई थिंक वी वर इन गुड हैंड्स। आप फीडबैक दे रहे हो ना ऐसे इस पॉडकास्ट के थ्रू। I'm joking. I love. No, I'm not joking, but. Of course you're not. And I love the honesty with which you guys are coming at this. It's really, really nice and really sweet. I want to ask you this before we let you go. The experience, I mean, clearly you guys enjoyed the shoot, both season 1 and season 2. It's wonderful that season 1 landed so well कि आपको season 2 पे एक increased budget मिला, थोड़े और material comfort मिले. Clearly you guys don't need it. You're very happy with how it was going. We need it यार, ऐसे मत बोले। season 2-3 में हमें कुछ नहीं देने वाले हैं, मुझे तो चाहिए। नहीं, बिल्कुल सबको individual vanity, सबको 2 होटल रूम इस बार। Sweet, पूरे उसमें अंदर ही पूल और जकूजी भी. But let me ask you this, guys, what would you say you're expecting the audience to say when they see season 2? Are they going to be as surprised as season 1, or are they going to think of it as in a different way? What is your expectation from the audience this time? You know what, like of course we are थोड़ा सा scared because अभी का जो टाइम चल रहा है ना, it's very uncertain. आपको पता ही नहीं है कौन सी चीज काम करेगी और कौन सी चीज काम नहीं करेगी. And I don't want to say this thing कि हमने बहुत हार्ड वर्क किया and all that stuff, but we are pretty sure कि season 1 में हम लोग इतना जामतारा नहीं दिखा पाए थे जितना हम season 2 में दिखाएंगे. मतलब आपको जामतारा के बारे में पता चलेगा. आई थिंक हम लोगों ने इतने डेप्थ में नहीं उस टाइम पे किया था. इस टाइम पे हम लोग काफी डेप्थ में राइटिंग हुई है एंड स्कैम्स काफी तरीके से खुले हैं, और हम लोगों ने वो ही कोशिश की है कि उसको कितना रियल और रॉ रख सके. कुछ भी चीजें ना मतलब हमारे जो ये डायरेक्टर साहब हैं, उनको सुपरफिशियल चीजें, ऊपरी तौर पे उनको बिल्कुल नहीं पसंद. उनको दिक्कत है फॉल्स. उनको दिक्कत है कि आप फॉल्स टोन मत यूज करो, आप ऐसे खड़े रहो जब तक नहीं आ रहा. इट्स बेटर टू स्टैंड स्टिल रादर देन यूजिंग फॉल्स टोन. तो जो जामतारा, आई थिंक वो जो एंसेंबल कास्ट के लिए, वो परफॉर्मेंस के लिए भी जाना गया है. एंड वो सीजन 2 में मतलब जो हमारे नए प्लेयर्स ऐड हो रहे हैं, रवि चाहर, आई वांट टू टेक दिस नेम बिकॉज पीपल विल गो क्रेजी आफ्टर सीइंग हिज परफॉर्मेंस. ही इज ब्रिलियंट. वो आपको इरफान साहब की याद दिलाएगा. आई डोंट नो, मतलब so that is high praise. Yeah. And I love that guy यार. मतलब मेरे एंड स्पर्श के सीन नहीं थे उसके साथ, बट ही इज ब्रिलियंट. आई मीन सीजन 2 में जब भी कोई कैरेक्टर एंटर होता है ना, उस पे बहुत नजर रहती है ऑडियंस की. तो आई एम बिट श्योर कि सबने बहुत ही ऑनेस्टी के साथ काम किया है. नाउ इट्स अप टू ऑडियंस एंड ऑफ कोर्स मतलब वी आर शोइंग सम ऑफ द वेरी बिगेस्ट स्कैम्स हैपनिंग इन जामतारा, जो इस बार सीजन 2 में होगा. But I think it's raw and it's real. That's what I'll focus. That's what I want to say, and I think it will connect to the audience because it's not shallow. It's not something कि हमने ऊपर काम नहीं किया है. मतलब there's this गहराइयाँ. Oh, beautiful. Before I let you guys go, first of all, congratulations on season 2 of a wonderful show. I'm excited for you guys. Depth in writing and depth of performance, I think, is a very potent combination. उसमें जब एक तीसरा element add हो जाए, जो होता है budget, then you have something amazing definitely on the cards. Before I let you guys go, I'd love to know what else you guys have going around. I know, Monica, you're doing a film. You've got, I think there's a film called Dukan, if I'm not mistaken. Yeah. And you have a show called Tuna on Netflix coming up. Sparsh, what are you up to outside of Jamtara? Bro, so I have completed this film called Lapata Ladies. The teaser is already out.
It is with Amir Khan production, and it is coming on in 2023, 3rd March. So the teaser is out, and it's a beautiful film. I think I cannot talk much about it right now, but once we meet later for the same project, then I can give you a lot of information about it. But if you see the teaser, it is already exciting. Like, I'm hearing some really good reviews about it. Apart from that, I'm recently doing I'm going on board with other production house. It's a big production. Again, I cannot take the name because you It's a big production. Yeah, because it's a big production. That's why you cannot take the names. But again, it's a good story, and I'm looking forward कि जब उसकी बात मैं आपसे कर पाऊंगा तो आपको और मजा आएगा. Bilkul, I look forward to that. Monika, can you tell us a little bit about Dukaan or Chuna? I think Dukaan is very close to my heart, and it's not like कि मुझे वो जामतारा के बाद मिला, and I auditioned for that thing, and it's based on surrogacy, and जिसके बारे में हर समय रहा है कि कृति सेनन का मिमी भी आया था surrogacy में, so they always say कि वो तो एक जैसा है, वो कहानी तो एक जैसी है. I don't want to answer that thing, but yeah, I'm quite very excited for that, yeah, because I want to work with Siddharth Garima. They are like brilliant writers, and unki writing is like what I admire. It's very lyrical, so it's like a dream come true. It becomes a bit commercial also, you know. So there are like 5 and 6 songs. Right. So it was like, wow, ye bhi hota hai kya? I love it. I'm glad you're tasting commercial cinema as well, while your amazing work in parallel is going. I mean, I don't know if it's parallel anymore. It's pretty mainstream. You guys are sitting on top of season 2 of one of the biggest shows in the country right now, one of the most eagerly anticipated season 2s in the country right now. Once again, Monika, Sparsh, thank you so much for joining me on this episode of Storytellers and Storysellers. I hope you had fun on this chat. We loved it, यार. हमने झूठ नहीं बोला, हमने बहुत दिल से बात किया इसमें. And the best part was that you gave, you know, that brief what you gave in the start, that I want you to go slow. I want you to process your answer and then take it so you can think and tell what you're saying. You know, it always gives us a spot where we can talk from our heart. They're not those spontaneous answer where you just have to be prepared to give the answer. Yeah. So that was something beautiful about your podcast, man. Thanks a lot for having us. Thank you, Vineet. Thank you so much. Thank you so much for joining us. Was this your first podcast though? Yeah. You guys did amazingly. Thank you so much for joining me. Thanks to everyone who helps put this show together, the amazing folks at IVM. Thank you to the team at Netflix for helping us land this as well. All the best to the folks putting together Jamtara Season 2. 23rd September is when it comes out. Check it out. Go to Netflix, stream the show, and love it, and tell everyone else. That's it on this episode of Storytellers and Storysellers. This is Vineet Kanabar saying goodbye.